The temple town of Ayodhya is now witnessing frenetic activity to build the new Ram Mandir. But what is being built is not just the temple, but an elaborate religious corridor. The corridor plan has three components: an 850-meter long road between Sringar Ghat and the new Ram temple, a 2-kilometer road from Sugriv Killa to the Ram temple, and a 13-kilometer road named the Ram Path. These three pathways will form part of the Ayodhya Ram Janmbhoomi corridor. The UP government plans to open this corridor for the devotees along with the Ram temple, which also will be completed by January 2024. Along the corridor paths, where evictions and ground levelling are happening in a hurry, the sight of the demolished ancient structures will disturb anyone who has some reverence for the past. These structures, described as living museums of an age-old culture, are similar to those in Varanasi. When they were razed, people who inhabited these spaces for generations were evicted and sent off with a small financial compensation. Those who had been tenants for generations have received nothing. हमारा नाम देवेंद्रनाथ मिश्रा है। हम यहाँ के तीन पुरोहित हैं। छः भैया के नाम से पंडल लाल मौर्य, हनुमान प्रसाद छः भैया के नाम से हम लोग यहाँ पे विख्यात हैं। यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे इसको धरोहर की तरह सहेजना चाहिए था। जैसे जो चीज़ें तोड़ी जा रही हैं, ठीक है चौड़ीकरण बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसे विदेशों में है पुरानी चीज़ों को सरकार ASI के द्वारा या अपने ही द्वारा किसी तरह उसको प्रिजर्व करती है कि जिससे बाहरी लोग आए तो देखें कि यहाँ की लखौड़ी की या हमारे 150-200 साल पुराने ये सब हमारे मंदिर हैं, धर्मशाले हैं, तो इनको उसी तरह सहेजना चाहिए कि आए तो उनको एक नई चीज़ दिखेगी। हाई फाई तो हर जगह दिखता है कि 10 मीटर छोड़ के जो है 2-3 फुट और छोड़ने के बाद जो है अपना बनाइएगा। जैसे ये टूट रहा है आप लोगों का, तो कुछ मुआवजा या ऐसी चीज़ें? मुआवजा बहुत कम आया है। मतलब उससे मुआवजा से आप लोग असंतुष्ट? हाँ असंतुष्ट है मुआवजा। नहीं जैसे सरकार है, सरकार को पैसा कमी है, हम लोग को अच्छा खासा पैसा देना चाहिए। नहीं जैसे कुछ खबरें ये भी है कि मुआवजा वितरित करने में जो भी उसमें कुछ अनियमितता है, भेदभाव हुआ है? ये सब नहीं। अच्छा, वो तो होटल हिसाब से अपना जोड़े जाड़े सामान दिए बस, और उसमें वही बात हुआ नहीं, लेकिन अपने आप मुआवजा बना रहे हैं वो। अच्छा 3 मीटर तो वही ले रहा है ना PWD, 1 मीटर का पैसा दिया है। अच्छा 3 मीटर ले रहे हैं, 1 मीटर का पैसा? हाँ 3 मीटर PWD नहीं लिए हैं, 4 मीटर। 3 मीटर PWD कह रहा है कि हमारा है। अच्छा और 1 मीटर PWD है, उसने पैसा दिया उसका। नहीं तो PWD किस आधार पे, कुछ कागज या कुछ ऐसा है या फिर ऐसे? वो कह रहा है पहले हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग था ये। अच्छा राष्ट्रीय हाँ। मतलब ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था इससे, ये हमारा? हाँ ये बात नहीं। अच्छा तो उसका कुछ जैसे उन्होंने कागज वगैरह या कुछ बस ये मौखिक ऐसे? मौखिक खाली मौखिक, उसका हाँ। कोई कागजी कार्रवाई? कोई कागजी कार्रवाई नहीं। This is another street corner where the local material history has been erased completely. This was where an age-old Hanuman temple and 19 smaller temples devoted to different deities existed. The bulldozers have finished their task and left the place literally empty. The estimates on the quantum of land required and acquired for the project were changed many times, say the locals. They got a compensation of around rupees 1 lakh each, irrespective of the scale of the acquisition. None of them received any official notification before eviction. The local people's request to the officials to show them the detailed project report went unheeded. It's a report that almost no one, local or otherwise, has seen. These people say that during the Kar Seva that demolished the Babri mosque, all of them had supported the Kar Sevaks by offering them food and shelter. Still, they lament that bulldozers came at night, their electricity connections were cut, and in a terrifying exercise of power, they got evicted from their own houses and shops. Naveen Srivastava is one of the 15 shop owners who were evicted for the construction of a bus bay as part of the Ayodhya corridor project. All of them have written to the Prime Minister, the UP Chief Minister and the Chief Justice of the Supreme Court requesting help to get rehabilitated in Ayodhya itself so that their livelihoods could be saved. अयोध्या को डेवलप करने के लिए यहाँ स्कीम लाई गई
तो लोगों को ये बताया गया कि 10-10 मीटर सड़क के किनारे आप लोगों को ज़मीनें जिनकी भी 10 मीटर आ रही है 20 सेंटर से, उनको छोड़नी पड़ेगी। लोग सहर्ष राम काज का काम था, लोग यहाँ के लोग सहर्ष तैयार हुए। सब लोगों ने अपनी अपनी ज़मीनें 10 मीटर पीछे कर ली, शासन का सहयोग किया हर तरीके से। आज की डेट में जब सब लोगों ने पीछे कर लिया, अपनी दुकानें गिरा ली, मकान गिरा लिए, किसी की रोजी रोटी व्यवसाय से लेके लोगों का आवास भी यहाँ बना हुआ है। अब वो लोग एक नई योजना लेके आ रहे हैं, कहीं बसवे बनना है, कहीं टॉयलेट बनना है, कहीं वो बेंच लगा रहे हैं। इस टाइप से करके ये चाह रहे हैं कि अब 15 मीटर लेना चाह रहे हैं, 20 मीटर। कोई सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं। अधिकारी वर्ग ऐसे हैं कि जबरन काम करना, जैसे बंदूक की नोक पे लोगों को कह रहे हैं आप गिरा दीजिए, नहीं कल हम खुद लगा के बुलडोजर गिरा देंगे। इस टाइप की चीज़ों को लोगों के मन में एक आशंका है कि हम यहाँ बचेंगे। 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से लोग यहाँ रह रहे हैं। कोई ये निश्चित नहीं है कि कोई बचेगा या रहेगा अयोध्या में, या केवल बाहरी यहाँ आगे रहेंगे। जैसे कोई योजना होती है, सड़क चौड़ीकरण होता है, उसमें अधिग्रहण एक होता है कि आप नोटिफिकेशन नोटिस जारी होगी। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। हम लोग शुरुआत से ही भाजपा को वोट देते आए, भाजपा ही रहे। आज हम लोगों को और पार्टियों के लोग हंसते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग बहुत नारा देते थे कि नून रोटी खाएंगे, भाजपा को लाएंगे, बाबा जी का बुलडोजर जिताएंगे। आज वही बुलडोजर आप लोगों के ऊपर चढ़ गया तो क्यों चिल्ला रहे हैं आप? बहरहाल तो सरकार की योजना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन रोजी रोटी लोगों को जा रहा है। मंदिर तो ठीक है, मंदिर गया वो भी वाकई में नुकसानदायक है। किसी तरीके से बचाया जा सकता अगर है तो उसको बचाया जाए। अभी भी बहुत समय बिगड़ा नहीं, क्योंकि अयोध्या एक आराध्य राम का हमारे एक आध्यात्मिक नगरी है, तीर्थ स्थल है। इसको पर्यटन बनाने में बहुत जोर हमको नहीं लगता देना चाहिए, क्योंकि पर्यटन स्थल अगर बनेगा तो यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी जो यहाँ के लिए ठीक नहीं है। और राम जी आएंगे तो अयोध्या पहचान पाएंगे? राम जी तो आएंगे तो अयोध्या मन से देखेंगे, अयोध्या वासियों की जो दुखी हाल है तो पहचान के जाएंगे। हमको लगता है राम भगवान अयोध्या से बहुत दूर हो गए। The project cost of the Ayodhya corridor is estimated at rupees 797 crore. Its progress is swift. The Ayodhya town came to the national limelight when the BJP turned it into the site of a political project spun out of an age-old mythological story. That politics led to the demolition of the Babri Masjid. A Supreme Court order gave the Sangh Parivar permission to build a Ram temple in the same spot and provided land elsewhere for building a replacement for the demolished mosque. The town is now witnessing instant eviction of the local people, including those sympathetic to the cause of the Ram Mandir. The area's religious geography and history have been wiped out in the process. The same BJP political leadership that stood for the Ram temple is now demolishing temples and unleashing bulldozers against its supporters. In the changing culture of Ayodhya, only one thing remains unchanged: the ability of Hindutva politics to conveniently assume contradictory positions and still remain unaffected by scrutiny or criticism.